Hello students, this is our first unit, motion, and this is our fourth lecture. The last topic we had discussed the concept of acceleration. Last topic में हमने acceleration को discuss कर लिया था और वो complete हो गया था, uniform, non-uniform, positive, negative, retardation, etc. Now there is another important topic in this unit, that is graphical representation of motion. यानी मोशन को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. सो लेट्स डिस्कस व्हाट आर ग्राफ्स. सो ग्राफ्स में आल्सो बी यूज्ड इन डिस्क्राइबिंग द मोशन. ग्राफ्स का यूज भी हम मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए कर सकते हैं. ग्राफ इज अ ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप बिटवीन द टू क्वांटिटीज प्लॉटेड ऑन एक्स एंड वाई. ग्राफ सिंपली होता क्या है, ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप होता है जो दो क्वांटिटीज के बीच में एक्स और वाई एक्सिस पर आपका प्लॉट किया जाता है. आप सभी को पता है, दिस इज एक्स एक्सिस, this is y axis, this is positive, this is negative, this is also positive, this is negative. Since this is a horizontal line, this is also called horizontal axis, this is a vertical line, this is called vertical axis, and this is the origin. Okay, so on this graph we can describe, we can explore the motion of an object. हम इस ग्राफ पर किसी भी उसका मोशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं. फर्स्ट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द ग्राफ. वन ऑफ द टू क्वांटिटीज, ग्राफ हमेशा दो क्वांटिटीज के बीच में प्लॉट होगा, एक एक्स पर और एक वाई पर. तो दो क्वांटिटीज में एक तो क्या हो सकती है, इंडिपेंडेंटली हो सकती है, यानी वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है, किसी पर डिपेंड नहीं करती. उसको हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी. सो वन ऑफ द टू क्वांटिटीज टू बी प्लॉटेड कैन बी चेंज इंडिपेंडेंटली. वो अपने आप में चेंज हो सकती है, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्वांटिटी. व्हाइल द अदर डिपेंड्स ऑन इट, जबकि दूसरी इस पर डिपेंड कर सकती है, दैट इज कॉल्ड dependent quantity. Generally the independent quantities is plotted on x axis. जो independent होगी उसको x axis पे प्लॉट करेंगे और जो dependent होगी उसको y axis पे प्लॉट करेंगे. For an example, let's discuss a graph between number of days and number of shirts made in a factory. कोई एक आपका रेडीमेड गारमेंट्स फैक्ट्री है और वो पर डे कुछ शर्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है, प्रोड्यूस करती है. ओके, तो आपको उन दोनों में ग्राफ प्लॉट करना है. तो दो क्वांटिटीज है, नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ शर्ट्स. तो देखिए नंबर ऑफ डेज तो इंडिपेंडेंट है, वो अपने आप ही बदलेंगे. आज संडे है, कल मंडे होगा, आज फ्राइडे है, कल सैटरडे होगा, तो वो किसी पे चेंज नहीं होगा. ओके, बट जो नंबर ऑफ शर्ट्स है वो डे पर डिपेंड कर सकती है. आज 10 बनी, कल 20 बनी, परसों 500 बनी, तो वो डे बाई डे, यानी नंबर ऑफ शर्ट्स किस पर डिपेंड हो रही है, नंबर ऑफ डेज पर. तो इन दिस कंडीशन नंबर ऑफ डेज are plotted on x axis. इधर आएंगे क्या, नंबर ऑफ डेज, और इधर क्या आएगा, शर्ट्स मेड इन वन डे, शर्ट्स मेड इन वन. ओके, so in this way we can plot graph between two quantities. So for describing the motion we have discussed few terms. मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमने कुछ टर्म्स डिनोट किए हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. इन सब को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे. लेट्स सी हाउ वी विल डू इट. तो दिस इज अवर फर्स्ट यूनिट, मोशन, एंड इन मोशन वी हैव डिस्कस्ड फॉलोइंग टर्म्स. हमने मोशन में बहुत सारे टर्म्स अभी तक डिस्कस कर लिए हैं. स्टार्टिंग से हमने मोशन डिस्कस किया, और देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, टाइम, स्पीड एंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. तो ऑल दीज टर्म्स डिस्क्राइब द वर्ड मोशन. मोशन को डिस्क्राइब करते हैं. सो द ग्राफ फॉर रिप्रेजेंटिंग द मोशन विल डिपेंड ऑन दीज क्वांटिटीज. इन क्वांटिटीज पर ही डिपेंड करेगा. सो बट there are only two types of graphs in motion. The first one is distance time graph, and the second one is velocity time graph. Velocity time graphs. Time, independent quantity. टाइम अपने आप में चेंज होता है. इंडिपेंडेंट क्वांटिटी मीन्स it will taken on
always x-axis and distance and velocity are dependent quantity. So it will taken on y-axis. दो एक्सिस में हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ ग्राफ्स इन मोशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बट सिर्फ दो ही टाइप के क्यों, जबकि क्वांटिटीज तो हमने बहुत सारी पढ़ी हुई है, डिस्टेंस भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सो दिस इज व्हाई, बिकॉज डिस्टेंस एंड displacement is a special case of distance, और distance and displacement are related to each other. ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ओके, टाइम तो सब में इंक्लूड होना ही है। स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड इज आल्सो ए स्पेशल केस ऑफ वेलोसिटी। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड एंड वेलोसिटी इज ऑफ डायरेक्शन। तो देयरफॉर हमने यहाँ से डिस्टेंस को चूज किया और यहाँ से हमने वेलोसिटी को चूज किया। अब एक्सीलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सीलरेशन इज velocity upon time. It means by the graph velocity time we can calculate the acceleration. Okay, so we have to discuss only two types of graphs in this unit: distance time graph, in which time is taken on x-axis and distance is taken on y-axis, and the second one is velocity time graph, in which time is taken on x-axis and velocity is taken on y-axis. This is the first graph, distance time graph. So what is distance time graph? It means the geometrical relationship between distance traveled by a body and the time taken is called distance. यानी ग्राफ geometrical relationship, यानी relation on x and y axis between the distance and the time taken is known as distance time graph. As we know that time is an independent quantity, and in graph independent quantity is taken on x-axis. So the time is taken along x-axis and the distance is a dependent quantity on time, so distance is taken along y-axis. Okay, so this is distance time graph. Distance time graph can be plotted for various motions. Various motions के लिए हम इसको plot कर सकते हैं. The first one is rest, second one is body moving with uniform velocity, and the third one is non-uniform velocity. Why we discuss velocity in distance time graph? Because velocity is the rate of change of distance or displacement, यानी टाइम के साथ साथ जैसे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट चेंज होती है उसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। बिकॉज वेलोसिटी is equal to distance upon time. Actually it is displacement upon time. But distance and displacement are equal in magnitude for a straight line. Straight path के लिए distance और displacement दोनों equal होते हैं. Therefore we will discuss body moving with uniform velocity and non-uniform velocity. So our first case is when body is at rest. Rest means when a body does not change its position with respect to a fixed place or surrounding. यानी जब कोई बॉडी अपनी सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में कुछ चेंज ही नहीं करती है उसकी पोजीशन, देन इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। रेस्ट में कहा जा सकता है इफ द बॉडी इज एट रेस्ट देन इट विल रिमेन एट द सेम डिस्टेंस एट ऑल द टाइम। अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो किसी फिक्स पोजीशन से उतनी ही डिस्टेंस पर रहेगी, टाइम पास होता रहेगा। इट मीन्स देयरफॉर द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी एट रेस्ट इज ए स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस। फॉर एग्जांपल दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी। बॉडी इज एट रेस्ट एट दिस पोजीशन। बॉडी इस पोजीशन पर रखी हुई है और हम इसे किसी और पोजीशन से ऑब्जर्व कर रहे हैं। टाइम काउंट होता जाएगा बट उसकी डिस्टेंस चेंज नहीं होगी। सो एट दिस टाइम सपोज दिस इज 1, डिस्टेंस विल बी हियर, दिस इज 2, डिस्टेंस विल बी हियर,
3, here 4. At all the times, the distance of the body from this origin will be same. Therefore, if we plot a graph meeting these points, it will come a straight line. ये क्या आएगा? एक straight line आएगा. So for the rest position, the distance time graph is a straight line parallel to time axis. This is the key point. You have to remember it. कि distance time graph rest के लिए straight line आता है और time axis के parallel आता है. Okay. Now we will discuss for uniform and non-uniform velocity. The second one is for uniform velocity. What is uniform velocity? It means when a body moves with uniform velocity, it will cover equal distances in equal intervals of time. यानी कोई body equal interval of time में equal distances को travel करती है तो उसे uniform velocity कहते हैं. ये हम पीछे discuss कर चुके हैं. In other words, the distance traveled is directly proportional to time. दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे ही वैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी. सो दस द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन. ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा. कैसे? ये यानी बिल्कुल सेंटर से पास होकर दोनों एक्सिस, यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, time is taken along x-axis, distance is taken along y-axis. When distance is directly proportional to time, so the graph between distance and time will come as a straight line, equally dividing this coordinate. This angle is 90 degree, so this will be 45 and this will be 45. Okay, so a straight line dividing the two coordinates x and y. So this will come and the slope of distance time graph, और इसका जो slope होगा वो क्या देगा? हमें velocity देगा. For calculating the velocity means calculation of velocity. Velocity को calculate करने के लिए what we will do? Just take a point P. P कोई भी एक पॉइंट ले लिया आपने और पार्टिकल आपका यहाँ पर है, यानी पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आ गया P पर. सो ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम P ऑन टाइम एंड डिस्टेंस एक्सिस. टाइम और डिस्टेंस एक्सिस पर P से परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कीजिए. तो क्या लिखेंगे? लेट अस टेक ए पॉइंट P ऑन द ग्राफ and draw perpendiculars from it on time axis as well as distance. ठीक है. इस P से हम इन दोनों पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दिस वन एंड दिस वन. सो व्हाट दिस विल गिव? OQ. दिस इज द टाइम टेकन इन रीचिंग फ्रॉम O to P, and what this will give? PQ will give the distance because this is a rectangle, so this OR will be equal to this PQ. Then OQ is the time taken and OR is equal to PQ is the distance traveled. Okay, and the velocity is, what is the velocity? Distance traveled upon time taken. Distance traveled is PQ. We will take PQ. And time taken is OQ. So this is the velocity of the body. And what is PQ upon OQ? This is the slope.
slope of graph. तो यही क्या है आपका स्लोप है, स्लोप ऑफ ग्राफ. सपोज दिस इज a straight line OA. So we can see the slope of the graph on distance time graph will give the velocity of the body. So in this way we can calculate the velocity by using this formula distance upon time from distance time graph. We will use it in describing the equations of motion further. Okay, so let's revise it. What is the uniform velocity? जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो वो क्या आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी ट्रेवल होगी. इस कंडीशन में डिस्टेंस जो है टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी. और जब दो क्वांटिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो जो ग्राफ आता है वो दोनों कोऑर्डिनेट्स को बिल्कुल डिवाइड करने वाला आता है. यानी ये 90 डिग्री है तो ये 45 इधर 45 इधर से बिल्कुल मिडिल से एक लाइन पास होगी. तो ये ग्राफ ऐसा आएगा और इस ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देगा, हमें वेलोसिटी देगा बॉडी की. ओके, और वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए इस ग्राफ पर कोई भी आप एक पॉइंट P ले लेंगे. इस पॉइंट P से दोनों पर टाइम एक्सिस पर और डिस्टेंस एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे. जो आपका टाइम एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट आएगा OQ वो टाइम होगा और ये OR जो होगा वो डिस्टेंस होगा. अब ये OR किसके इक्वल होगा, PQ के, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है. तो OQ टाइम टेकन हो जाएगा, PQ डिस्टेंस ट्रेवल. तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, PQ अपॉन OQ. और ये जो PQ अपॉन OQ होगा दिस इज ऑल्सो नोन एज द स्लोप ऑफ द ग्राफ. ओके, दिस. And the third one is for non-uniform velocity. Non-uniform velocity means clear है कि when a body moves with non-uniform velocity, it will cover unequal distances in equal intervals of time. टाइम इंटरवल तो सेम होगा बट जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो अनइक्वल होगा, अलग अलग होगा. तो therefore the distance time graph for a body moving with non-uniform velocity is a curve line. ये कुछ एक कर्व लाइन की तरीके से आएगा. ओके, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होगा वो आपका अनइक्वल होगा. सो इट कैन आल्सो बी रिगार्डेड एज ए एक्सेलरेटेड मोशन. यानी हम ये कह सकते हैं कि बॉडी क्या है, एक्सेलरेशन में. बिकॉज अनइक्वल डिस्टेंस का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड दैट इज acceleration. So non-uniform velocity means it can also be said as the body moving with accelerated motion. Okay, so these are the distance time graphs for a body moving at rest, moving with uniform velocity and moving with non-uniform velocity, and we can regard it as accelerated motion. Okay, so these are the three types of graphs. Distance time graph has been completed. Now we will discuss velocity time graphs in our next video.